Hi there, welcome back to English with Prashant. This is third of the total 3 videos of tenses. If you haven't watched present and past tense videos, the link is in the descriptions down below. In this video, we shall be talking about the future tense and its 4 types. So let's begin with future simple. We use future simple for the actions that will happen in future. यानी हम future simple उन actions के लिए use करते हैं जो actions future में होंगे. And the translation of future simple will end with ga, ge, gi. We make future simple with the subject plus will plus V1. For example, Sarah will take coffee in the morning. We will watch this movie later. The restaurant will open at 10 in the morning. All these 3 sentences simply mean that the underlined actions will happen in the future. यानी इन सभी सेंटेंसेस का मतलब यही है कि फ्यूचर में एक्शंस होंगे. विल प्लस V1 का हमेशा मतलब यही है कि एक्शंस फ्यूचर में होंगे. कीप इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग नेगेटिव सेंटेंसेस यू हैव टू यूज नॉट आफ्टर विल in positive sentences. For example, Sarah will not take coffee in the morning. One more thing, you can even say want. Will plus not becomes want. Sarah won't take coffee in the morning. If you have watched present and past videos, then you already know that we frame questions by putting helping verbs before the subject. For example, will Sarah take coffee in the morning? Will we watch this movie later? Will the restaurant open at 10 in the morning? And you will frame negative questions by writing not after the subject. Let's now move to future continuous tense. Hello. Hey Prashant, how you doing, bro? I'm great, bro, but I was slightly busy shooting for a video. Yeah, I know you're an extremely busy person, but let me quickly tell you that I'm going for a movie. Do you want to join? That's fantastic. Tomorrow at 3 in the afternoon. Well, that's not fantastic. I will be taking an exam at that moment. शायद ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है. It's very simple. मेरे दोस्त ने मुझे एक मूवी के लिए पूछा जो कल देखने वाला है, and I replied that I will be taking an exam at that moment. यानी उस टाइम पर मैं कोई और एक्शन कर रहा हूँगा फ्यूचर में. यानी कल 3 बजे मैं एग्जाम दे रहा हूँगा, यानी 3 बजे ये एक्शन कंटिन्यू कर रहा होगा. We use future continuous tense for the actions that will be continuing in future. Some more examples of future continuous are: they will be playing finals next year. He will be studying at the library. बस इतना समझना है कि ये actions future में continue कर रहे होंगे एक specific time पर. वो अगले साल finals खेल रहे होंगे. वह लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा. Let's now move to future perfect tense. Well, now you know it's all scripted. Listen carefully. Hello. Well, I know you're too busy, but as you're having exam these days, so can I have your PlayStation for a week? Bro, I will have taken my exams by tomorrow. अगर आप कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, उस केस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. आई रिपीट, अगर आप कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, उस केस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. जैसे दे विल हैव रिसीव्ड द मेल मीन्स कि उन्होंने मेल रिसीव कर लिया होगा. लेट्स नाउ मूव टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. हेलो. Am I talking to Mr. Prashant? Yes. I am Monica from ABC Language Institute. Have you applied for a teacher of English language? Haven't you? I might have, I don't remember. Let me know only one thing. How long have you been teaching English? In 2021, I will have been teaching English for 6 years. To understand this structure, let's take a timeline over here. और future perfect continuous को समझने के लिए हम present perfect continuous और past perfect continuous को compare कर लेते हैं. और मान लीजिए कि ये 2020 चल रहा है और मैं 2015 से English पढ़ा रहा हूँ. 2015 point A and 2020 point B. और अगर मैं कहूँ कि मैं 2015 से 2018 तक पढ़ा रहा था, 2015 point A, 2018 point B. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो point A सेम ही है दोनों टाइमलाइन के अंदर, बट जो point B है वो फर्स्ट टाइमलाइन के अंदर प्रेजेंट में है और सेकंड टाइमलाइन के अंदर वो पास्ट में ही है, 2018 में ही है. और यहाँ पर थर्ड टाइमलाइन में जो पॉइंट बी है वो फ्यूचर में होगा.
अगर पॉइंट बी प्रेजेंट तक चला है, इट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर पॉइंट बी पास्ट तक चला है, इट्स पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एंड अगर पॉइंट बी फ्यूचर में होगा, यानी 2020 के बाद होता है, सो इट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी अगर आपको कहना हो कि मैं 2021 में 6 साल से पढ़ा रहा हूँगा, then you will say in 2021 I will have been teaching English for 6 years. Simple. If somebody has been waiting for you since 2 o'clock, 2 o'clock is point A. And what's the time right now? It's 4 o'clock. It's point B. कोई 2 बजे से आपका इंतजार कर रहा है और अभी टाइम हुआ है 4. It is present perfect continuous tense. You will say he has been waiting for you for 2 hours. और अगर मुझे कहना हो कि वह इंसान 3 बजे तक इंतजार कर रहा था, जबकि अभी टाइम क्या हुआ है 4, यानी जो हमारा पॉइंट बी है वो पास्ट में ही होगा. ओके, इट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. वी विल से he had been waiting for you for 1 hour. बट अगर मैं अब आप लोगों से पूछूं कि वो 2 बजे से इंतजार कर रहा था और अभी 4 बज रहे हैं, बट अगर वो 6 बजे तक इंतजार करता तो वह कितने घंटे से इंतजार कर रहा होता? कैलकुलेट करें. इट्स अबाउट 4 hours. द पॉइंट बी शैल बी इन फ्यूचर. We shall say at 6 o'clock he will have been waiting for 4 hours. If you have watched the previous videos, then you know how to practice the all 12 tenses. And all the other tenses related videos are in the descriptions down below. If this video has benefited you, please like, comment and share, because that is how you can benefit this video.